लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था, मोमेंटम के क्वेश्चंस कर रहे थे हम, राइट? अच्छा जी, अच्छा जो आ गया हमारे पास बुक 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 this and then this. I told you that I'll give you a few more questions on that topic and then we'll proceed to the topic of energy. अच्छा अच्छा जी, what was the last question? The last question was of that girl jumping off the boat, right? Yes. We should write clear on the first page. What should be on the first page? Should be on the first page. Then this. Okay. A truck of mass 500 kg moving at there is a truck of mass 500 kg. ग्लोबल पर्सपेक्टिव में क्या पढ़ते हैं आप लोग? हम लोग ग्लोबली, नेशनली और लोकली डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एक टॉपिक को देखते हैं. There are 3 papers: a written examination, individual report, and a group project. फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली कौन सा टॉपिक आप लोगों ने एक्सप्लोर किया? हम सारा कुछ कर चुके हैं. जिसका एग्जाम जो इंडिविजुअल रिपोर्ट है उसके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिसके अंदर हमने चूज करके खुद ही इसके ऊपर रिसर्च करके लिखना है. तो हम अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं. और रिटन एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ पढ़ना नहीं है, बस देयर जस्ट स्पेसिफिक टॉपिक्स जिसके ऊपर आपको कोई इंसर्ट मिलेगी और फिर उसको देख के अपने आंसर्स करने होते हैं. मैंने ग्लोबल पर्सपेक्टिव का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ नहीं है, तो आई एम रियली क्यूरियस कि व्हाट सॉर्ट ऑफ टॉपिक्स, करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस कर रहे थे आप लोग या हिस्टोरिक टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर रहे थे? Topics like migration, transport, different topics होते हैं. Like individual report में हम sustainable कर सकते हैं, human and other species, biodiversity, ecosystem loss, trade and age. और group project में poverty and inequality, human rights. आपका ग्रुप प्रोजेक्ट इसके ऊपर है, आई मीन इज इट गोइंग टू बी ऑन वन टॉपिक या ऑन वेरियस टॉपिक्स? Just one topic. And yours is on poverty or what was the other thing that you mentioned? Poverty and inequality. हमने एक वीडियो भी बनाई थी अपने ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए, यूट्यूब पे है वो. बहुत वेरी नाइस. शेयर कीजिएगा अगर पॉसिबल हो, मुझे मैसेज कीजिएगा उसका लिंक या वैसे बताइएगा. I'll try to find it out. I'll send you the link. आपका फर्दर स्टडीज में इसको इस सब्जेक्ट को परसू करने का इरादा है? फॉर एग्जांपल क्या होता है, पॉलिटिकल स्टडीज या पॉलिटिकल साइंसेस या इंटरनेशनल रिलेशंस जो है बैचलर्स लेवल पे आफ्टर कॉलेज, कोई है इंटरेस्ट अभी या तो खास नहीं? अभी तो आई डोंट नो.
आप लोगों का वहाँ पे जो sort of residence है, is it like permanent या is it going to be for a prolonged period या it's temporary? Temporary. Mm-hmm. Like we're here for 3 years, so till then. Oh, nice. तो A levels इंशाल्लाह आपका वहीं से होगा फिर. जो first year वो यहाँ से होगा और दूसरा फिर पाकिस्तान से. Mm-hmm. Mm-hmm. ठीक है, this is the complete question. थोड़ा सा लंबी लग रहा है लेकिन it's quite easy. Let's see. Is the answer 2.5 meters per second? Is 2.5 meters per second indeed. अच्छा जी, quickly next question पे हम चलते हैं. Next question is the velocity. Okay. Relocating every few years, is it an exciting experience or tiring? Sorry, what did you say? Relocating every few years, is it an experience that you cherish or is it something that you're tired of? No, actually, my father was in FBR and then he came here Mm-hmm. now for 3 years. So we were in Pakistan before that. Uh-huh. Uh-huh. Yeah. So now he's the Minister of Trade and Investment in the embassy. Mm-hmm. Mashallah, good. Last 10 kg increases. अच्छा मेरा इस तरह का एक्सपीरियंस था कि आई गॉट टू लिव इन मैनी सिटीज. अब्रॉड कभी भी नहीं, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा शहरों में. आई वॉज बोर्न सरगोधा, पता नहीं आपने नाम सुना या नहीं, देहरादून सिटी सरगोधा. एंड देन आई लिव इन Bahawalpur for a few years. Then we moved to Lahore. Then we moved to Karachi. And now we are in Rawalpindi. मेरा तो अबू की जॉब की वजह से वी हैड टू. कराची थोड़ा लंबा स्टे था, बट अगेन इट वाज फार अवे फ्रॉम फैमिली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो 24 seconds, 40 seconds. When a force acts on it,
और 2 seconds. आप कराची नहीं है कभी? नहीं. अच्छा जी. So you need to answer 4 things. Momentum before force X and momentum after force X, and then you have to tell momentum gain per second. The last thing you have to tell is value of force. Okay. आप स्पोर्ट्स को देखती या फॉलो करती हैं? क्या चीज? स्पोर्ट्स. जी कभी कभी, लेकिन इतना ज्यादा नहीं. तो मतलब पीएसएल आप नहीं देखते? नहीं देखती.
What does it mean by the value of force? You've got momentum. Momentum is changing, and momentum is changing over a period of time. You have studied before that the rate of change of momentum is equal to force. There is some force which causes a rate, which causes a change of momentum. What is the amount of that force? Okay. Are the answers 40, 80, 2, and 20? 40, 80, 20, and 20. No, 2 There and is 20. no 20 and 20. Actually, there is no difference between C and D. They're the same thing. Okay. Momentum gained per second. That is in fact change in momentum over change in time, right? And that is equal to force. So C and D Okay. they are practically the same thing. अच्छा Okay. आई होप कि आपने इसकी कैलकुलेशन यही की होगी सी की कि चेंज ऑफ मोमेंटम like mv minus mu by time. Yeah. अच्छा जी so you'll have it 10 into 8 80 minus 40 divided by 2 right c के लिए आपने यही Yeah. किया होगा 10 multiplied by 8 minus 10 multiplied by 4 divided by 2 and that will give you answer of 20. अच्छा जी just one last question let's see we've got hmm, now we've got a rocket of mass how much 10,000 kg 10,000 kg it uses 5 kg of fuel and oxygen fuel and oxygen to produce exhaust gases ejected at 5,000 meters per second. Calculate the increase in velocity. What?
Sir, is the answer 2.5? It is. It is. अच्छा, आपने मुझे क्विकली बता दें कि किस तरह सॉल्व किया आपने। इनको सेपरेट मासेस अज्यूम किए, रॉकेट को और फ्यूल को। I multiplied 10,000 with 5,000, and then I subtracted 5 from 10,000. And then that gave me 9,995 B, and I equal it to 10,000 multiplied by 5,000. And then I subtracted the answer from 5,000. ठीक, perfect. ठीक है जी, correct. अच्छा जी, let us move on to the next topic, which is energy. Energy का topic remind me again, आपने स्कूल में नहीं किया हुआ अभी, right? नहीं, अभी नहीं किया हुआ। ठीक है. How do we define energy? Energy is the ability to do work. Okay. ठीक है जी.
and secondly it is measured in यूनिट क्या होता है एनर्जी का? joules. परफेक्ट। अच्छा जी, ठीक है जी। केमिकल एनर्जी कहाँ पे होती है? केमिकल एनर्जी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? केमिकल एनर्जी एग्जिस्ट करती है फूड में या फ्यूल्स में, लाइक ऑयल गैस। ठीक है जी। देन वी हैव गॉट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ये किन बॉडीज में एग्जिस्ट करती है? Any body which gains height above the Earth's surface contains potential energy. So any object which gains height above the Earth, it will have some form of potential energy. ठीक है। Similarly, if we compress or stretch a material, elastic material, spring हो गया, rubber हो गया, तो that object will also possess, in its stretched form, will possess potential energy. अच्छा जी। देन वी हैव गॉट काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है ये आगे हम जाके देखेंगे। इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला mgh, मास टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टाइम्स हाइट। ठीक है। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion. तो any moving body contains kinetic energy. Kinetic energy हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमारे पास फॉर्मूला आगे जाके हम देखेंगे, हाफ mv²। अच्छा जी। all moving bodies they possess kinetic energy and the faster they move the more kinetic energy they possess since it's dependent on velocity. अच्छा जी। इसके अलावा हमारे पास कौन सी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती हैं? हाँ जी, other forms of energy that we have got include heat energy। Okay. ठीक है। all bodies, I mean the more the temperature of any body, the more heat energy it possesses। electrical energy इसी तरह हमारे पास होती है। electrical energy क्या होती है जी? हमारे पास बैटरीज में जो एनर्जी stored होती है which help us run various motors or various electronic devices, that energy is called electrical energy। Okay. अच्छा। then there is this phenomena of energy transfer all around us, we see day in day out energy transfer। आपके आसपास एनर्जी ट्रांसफर की कोई एग्जांपल है? right where you are sitting right now। आपके पास अगर कोई फैन या एयर कंडीशनर चल रहा है तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बीइंग कन्वर्टेड इनटू विंड एनर्जी या सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। सिमिलरली हीटिंग सिस्टम्स हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या केमिकल एनर्जी को यूज करके हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। हम जो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, if either of us did not possess any energy, the person would not, I mean, the one who does not possess energy would not have been able to carry out the conversation। एनर्जी जब हमारी ड्रेन हो जाती है हम बात नहीं कर पाते। हमारी बॉडी में टू कैरी आउट ऑल द फंक्शंस दैट वी डू वी नीड एनर्जी। और ये जो हम खाना खा रहे होते हैं
एनर्जी के लिए ही खा रहे होते हैं, ठीक है, टू गेन केमिकल एनर्जी, एंड देन दैट केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, फॉर एग्जांपल आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, मेरी मूवमेंट्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, कुछ हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। तो I mean, all around us there are various examples of transfer of energy from one form to another. अच्छा, इसी तरह एनर्जी से मिलता जुलता हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है वर्क डन का। व्हाट इज वर्क डन? Work done is when we apply force on an object, when force is applied on an object and the object covers some distance, work is done. Yeah, there is some work done. Okay. Some work done. ठीक है जी। तो वर्क डन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स टाइम्स डिस्टेंस। ठीक है जी। तो हमारे पास यूजुअली जो वर्क डन का कॉन्सेप्ट नॉर्मल लैंग्वेज में होता है, इट्स स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दैट। अगर कोई भी बंदा एक जगह बैठा रहे और वो पूरा दिन जो है कुछ, लेट्स से कि ही इज सिटिंग समवेयर एंड थिंकिंग, and at the end of the day, let's say he comes up with a theorem, so he might say, जो लैंग्वेज का यूज है उसमें वो कह सकता है कि आई हैव डन सम वर्क, but in the language of physics he has not done any work at all, because he has neither applied any force, and also there has been no, for example, distance covered as a result of application of that force, hence no work is done। ठीक है। Okay. तो वर्क डन के लिए देयर हैज टू बी एन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड देयर हैज टू बी सम डिस्टेंस कवर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं कि वर्क डन का यूनिट क्या होगा? फोर्स का यूनिट क्या होता है? Newtons. न्यूटन्स। और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? Meter. मीटर्स। अच्छा जी। तो इसका डिस्टेंस, इसका यूनिट बनना तो चाहिए न्यूटन मीटर्स, बट यूजुअली द यूनिट दैट वी यूज फॉर वर्क डन इज joules, the same as energy, because if you remember a few seconds ago I defined energy as the ability to do work। Yeah. ठीक है। तो वही एनर्जी यूज करते हुए व्हेन आई एक्चुअली गेट सम वर्क डन, द यूनिट फॉर दैट वर्क डन इज आल्सो joules। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं यूनिट for work done is joules। अच्छा जी। Similarly we have got another concept which is law of conservation of energy। Are you aware of this concept? Must have heard it before। uh, law of conservation of energy, law of conservation of energy, shall we do that or shall we do this before? अच्छा 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 अच्छा, चलें पहले दूसरा कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। जिस तरह हमारे पास वर्क डन का कॉन्सेप्ट है, इसी तरह हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है पावर का। डू यू थिंक देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन वर्क डन एंड पावर? I think power would be the amount of force required to do some work. The rate of transfer of energy or the rate of work done, the rate of transfer of energy or the rate of
work done is called power. ठीक है जी. The quickest way to explain power to someone is कि when I move my hand, ठीक है, I put my hand on my, let's say, brother's cheek और मैं आहिस्ता आहिस्ता उसको move कर रहा हूँ, तो there is some work done because I'm applying some force on his face and his face is moving. But if I move my hand very rapidly across his face, so that is called slapping. और उसके रीजन उसकी पावर जो है, the only difference that has occurred is कि पावर जो है वो increase हो गई है. The same amount of energy transfer has now occurred in a very short period of time. Okay. ठीक है जी. तो power is work done by time taken. Or it is equal to energy transfer per unit time. ठीक है जी. अच्छा, पावर का यूनिट क्या होता है? What? गुड. पावर का यूनिट हमारे पास होता है it's represented by capital W. अच्छा, इसी तरह पावर जो है इट्स यूजुअली हम लार्ज स्केल पे बहुत कॉमनली ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है, तो वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ किलोवाट्स एंड मेगावाट्स. ठीक है. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का हम एनर्जी क्राइसिस जब डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं जी एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हो रही है, कितनी एनर्जी की डिमांड है, शॉर्टफॉल कितना है एनर्जी का. तो वी आर डिस्कसिंग दैट प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ मेगावाट्स. कितने मेगावाट हम प्रोड्यूस करते हैं, कितने मेगावाट्स की डिमांड है, एंड मेगावाट्स इज 10 to the power 6 watts. सिमिलरली जो हमारे हाउस होल्ड अप्लायंसेज हैं उनमें से कई जो हैं उनकी हम किलो वॉट्स में पावर डिटरमिन कर रहे थे कि कितनी और वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं. तो दैट इज 10 to the power 3 watts. अच्छा, with that the next topic that we have got is law of conservation of energy. Law of conservation of energy. ठीक है जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या कहता है जी? ये हमें कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो फिर एनर्जी हमारे पास आती कहाँ से? इफ इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. It's converted from one point to the other. Very good. Can neither be created nor be destroyed, but can be converted from one form to another. ठीक है. अच्छा, तो एनर्जी जो है whenever we need energy we cannot create it out of nothing. We have to get some other form of energy और उसको यूज करते हुए we can convert it into some other form in whichever form we need it. So for example, if we have got heat energy and we need electrical energy, so we can convert that heat energy into electrical energy. Electrical energy we cannot create it out of nothing, but heat energy that can be converted into electrical energy. अच्छा, इसी तरह जब हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता चल गया, तो देयर इज अनदर समवट रिलेटेड कॉन्सेप्ट कॉल्ड एफिशिएंसी. Okay. एफिशिएंसी क्या होता है? अच्छा जी, एफिशिएंसी को दो तीन तरह से हम इसकी डिफाइन कर सकते हैं. एफिशिएंसी एक तो हमारे पास जनरल लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट है ना, फिजिक्स में जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है इट्स अ लॉट सिमिलर टू दैट.
efficiency is the rate, नहीं, efficiency is के what percentage of power input or energy input or work done input gets converted into useful output. ठीक है, Okay. तो useful work done divided by total work done into 100. Similarly, useful energy output divided by total energy input multiplied by 100. Similarly, useful power output over total power input मल्टीप्लाई बाय 100. अच्छा, ये जो सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा, ये पावर जनरेशन में बहुत कॉमनली यूज होता है. मिसाल के तौर पे हम जब पढ़ते हैं जी कि पावर हमने जनरेट करना है, तो देर आर डिफरेंट सोर्सेज जिनको यूज करते हुए पावर जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, थर्ड कॉन्सेप्ट या सेकंड, एनर्जी आउटपुट, एनर्जी इनपुट. सो फॉर एग्जांपल देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कि आप रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो यूज करें. ठीक है, कि हमारे पास दुनिया में जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, तो आपको अगर एनर्जी चाहिए तो इंस्टेड ऑफ बर्निंग कोल, इट्स let's say more environment friendly to use solar energy या wind energy to generate electrical energy. But why is, I mean, it's such common sense के हाँ ठीक है, कोई pollution भी generate नहीं हो रहा, तो फिर why is it not commonly adopted across the globe, या इतना easily apply क्यों नहीं होता फिर ये concept if it's that good? उसका the amount of energy produced is in less quantity. जी, तो यही होता है कि जितना हम एनर्जी इनपुट दे रहे होते हैं उसके उसके कंपैरिजन में जो एनर्जी आउटपुट हमें मिल रहा है दैट इज टू लिटिल. ठीक है, एंड एज अ होल भी वो बहुत कम है कि टू फुलफिल अवर एनर्जी डिमांड्स, एंड एज अ मेथड आल्सो इट्स क्वाइट इनएफिशिएंट कि आप जितना इनपुट दे रहे हैं उसके मुकाबले में आपको उतना आउटपुट नहीं मिल रहा. तो वो फिर साइंटिस्ट्स हैं, दे हैव बीन वर्किंग ऑन इट हाउ टू improve the efficiencies of different devices या different energy conversion methods. So that is a topic to be explored later on, but now for our purpose we need to know how we can calculate efficiency given different form of data. कि हमें वर्क डन की फॉर्म में दिया हुआ, हमें एनर्जी की फॉर्म में दिया हुआ, हमें पावर की फॉर्म में दिया हुआ. So we can calculate in all three forms what's the efficiency of a particular system. अच्छा जी, name the energy transfer which occurs when an electric bell rings. जी मैडम. It's the इलेक्ट्रिक बेल कौन सी एनर्जी की फॉर्म यूज करती है? electrical energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिजली पे चलती है बेल. बिजली नहीं हो तो बेल बजती, नॉक करना पड़ता है, बेल नहीं बजती. ठीक है, अच्छा अगर बैटरी या सेल लगा हुआ तब बज जाती है, लेकिन स्टिल जो सेल है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही यूज कर रहा था, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो स्टोर्ड होती है. अच्छा, द अदर क्वेश्चन इज कि उसका आउटपुट किस फॉर्म में होता है? इलेक्ट्रिकल जो भी बेल है, जब बेल रिंग करती है उसका आउटपुट किस फॉर्म में होता है? साउंड एनर्जी. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है. अच्छा, व्हेन समवन स्पीक्स इनटू अ माइक्रोफोन, हमारी साउंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. ठीक है, इट्स द रिवर्स ऑफ द फर्स्ट. अच्छा, थर्ड
there is a ball thrown upwards. Haji, when we throw a ball upwards, what is the energy conversion taking place over here? Potential energy. पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है या पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसी और फॉर्म में? Potential energy may convert. And what is getting converted into potential energy? Which energy? Kinetic energy. Okay. हमारी जब भी कोई बॉडी मूव कर रही है ऑलवेज थिंक ऑफ काइनेटिक एनर्जी. और ये जो बॉल थ्रोन अपवर्ड्स, बॉल थ्रोन डाउनवर्ड्स, एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, इसमें यूजुअली द मेजर चंक इज के पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का इंटरकन्वर्जन होता है. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लूजिंग हाइट तो पोटेंशियल एनर्जी जब कम हो रही होती है, काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही होती है, तभी ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नीचे आता जाता है एक्सेलरेशन की वजह से उसकी स्पीड हाफ एम बी स्क्वायर्ड, तो काइनेटिक एनर्जी वो गेन कर रहा था तो वेलोसिटी उसकी बढ़ रही होती है. अच्छा, सिमिलरली जब हम किसी बॉडी को अपवर्ड्स फेंकते हैं तो ग्रेविटेशनल पुल उसको स्लो कर रहा होता है. ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है तो काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी. एंड एज इट गेन्स हाइट इट्स पोटेंशियल एनर्जी कीप्स इंक्रीजिंग अंटिल इट रीचेस इट्स मैक्सिमम हाइट. अच्छा, देयर इज अ पिक्चर ऑन टेलीविजन स्क्रीन. इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी लाइट और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है, जो पिक्चर्स हमें नजर आ रही हैं. ठीक है. अच्छा, द लास्ट वन इज टॉर्च. टॉर्च में क्या हो रहा होता है? टॉर्च इज ऑन. It's heat energy to electrical energy. टॉर्च ये वो आग वाली टॉर्च नहीं है, ये वो बैटरी वाली टॉर्च है. तो इट्स एक्चुअली केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी. जो बैटरी में केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है उस डिवाइस को रन करने के लिए. एंड then that gets converted into light and heat energy. अच्छा, ठीक है. There is another such scenario. Let's see. Um, then the far represented. ठीक है, coal-fired power station है. Energy of coal becomes energy which changes into water steam. ठीक है, ये हम पास पे क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे it will get covered. There is a mass of 3 kg. It's lifted vertically upwards 6 meter. How much work is done? Vertically upwards, how much? Mass of 3 kg. बेशक लिख लें. Mass 3 kg. Okay. Lifted vertically upwards 6 meters. Um, 18. 18 नहीं होगा. हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? सॉरी, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? Oh, it's a force into the distance. तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. और आपने कुछ क्लासेस पहले मुझे बताया था कि वेट इज एक्चुअली अ फोर्स. Yeah. ठीक है जी. तो अगर मुझे मास दिया होगा किसी बॉडी का तो फर्स्ट आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू वेट and that would be a force and then that force multiplied by distance. तो अगर मुझे 3 kg मास दिया हुआ तो 3 by 10 उसका वेट या फोर्स हो जाएगी and lifted upwards 6 meters so it becomes 180 joules. अच्छा जी, अच्छा जी. Hiker climbs a hill 300 meter high. Hiker has a mass of 50 kg. Work done.
अच्छा सर, एक बात बताएं, आपने पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर थोड़ा सा काम किया है अभी, तो डिड यू कम अक्रॉस दी वर्क, अच्छा आपको नोबेल प्राइज का तो आइडिया होगा ही क्या होता है, या ठीक है। इसी तरह आपको ये भी पता होगा कि एक इकोनॉमिक्स का भी नोबेल प्राइज होता है होगा। होता है। आई थिंक 6 होते हैं नोबेल प्राइज, 6 या 5, कौन से हैं? एक आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, देन देयर इज पीस, इकोनॉमिक्स, आई डोंट नो और कौन सा है, आई कांट रिमेंबर राइट नाउ इफ देयर इज एनी अदर। अच्छा तो ये हो गया हमारे, अच्छा इसमें पीस इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल वन, तो पता नहीं किसको मिलता है और किस चीज़ पे मिलता है, कभी किसी को नहीं पता चला। अच्छा इकोनॉमिक्स का जो है, इकोनॉमिक्स का लेटेस्ट नोबेल प्राइज, डू यू हैव एनी आइडिया किसको मिला था? No. What I remember is the last one or the one before it. Let me quickly check. Uh, Economics Nobel Prize, if I'm right, ये उनको मिला था, अभिजीत को मिला नहीं, इससे पिछला मिला था उसको। नहीं, लास्ट वन किसी और को मिला है, ठीक है। आई थिंक 2019 का मिला था उनको। लेट मी कंफर्म, लेट मी कंफर्म, यस, अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो इनकी बीवी हैं, और एक और कोई साहब है, माइकल फ्रेंगर। अच्छा इनको, अच्छा ये मुझे क्यों याद आ रहा है, इनको आपको पता है किस चीज़ पे नोबेल प्राइज मिला था, मतलब दे मस्ट हैव डन समथिंग टू कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक थ्योरी, कि जिसकी वजह से इनको इकोनॉमिक्स को नोबेल प्राइज मिला। इनका मेन काम क्या है इकोनॉमिक्स में, किस चीज़ के ऊपर है? इट इज़ ऑन पॉवर्टी एलिवेशन, ठीक है। अच्छा एक हमारे पास एनजीओ है बहुत बड़ी, ब्रैक के नाम से, पहले वो एक्रोनिम था ब्रिंगिंग रिसोर्सेज अक्रॉस कंट्रीज, आई थिंक बांग्लादेश से ऑपरेट करती है, बट नाउ आई थिंक उनका चेंज हो गया है, नाउ दे जस्ट कॉल देमसेल्व्स ब्रैक, इट्स नॉट एन एक्रोनिम ऑफ समथिंग। तो उनके साथ इन लोगों ने काफ़ी काम किया था, and they had a few suggestions on how we can eliminate poverty from the world. I don't know if your work resulted in some suggestions के world poverty को हम किस तरह reduce कर सकते हैं, but here is some work which got international recognition on how. By the way, did your work contain any recommendations on how to remove poverty या how to alleviate poverty? Yes. ठीक है, और अगर आप मुझे 2-3 सेंटेंसेस या 2-3 मेजर आउटकम्स या सजेशंस अपने बता सकें, आपके रिकमेंडेशंस क्या थे? हमने क्या था, लाइक इंडिविजुअल, लाइक जो नॉर्मल लोग हैं वो कैसे हेल्प कर सकते हैं, लाइक गिव क्लोथ्स, food, books to the poor people, and the governments could help the poor by giving them jobs and trying to improve their economic conditions and reduce inequality. अच्छा इसी तरह, did you by any chance come across the name of Malthus? No. अच्छा, देयर वाज दिस इकोनॉमिस्ट, इनका नाम था मैल्थ्यूस। मैल्थ्यूस साहब ने काफ़ी अर्सा पहले एक थ्योरी प्रपोज की थी। उन्होंने कहा था, आपने मैथमेटिक्स में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़े? जी। ठीक है। उन्होंने कहा था कि जो हमारे दुनिया के रिसोर्सेज हैं, लेट्स से फूड आउटपुट जो है, दैट इज इंक्रीजिंग अरिथमेटिकली, ठीक है जी, जो हमारा फूड आउटपुट है, और जो हमारी दुनिया की पॉपुलेशन है, दैट इज इंक्रीजिंग इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो एनी high school student or even IG level student can easily tell कि we are going to soon face massive starvation। हमारे फूड रिसोर्सेज जो हैं वो तो अरिथमेटिकली ग्रो कर रहे हैं, पॉपुलेशन हमारी ज्योमेट्रिकली ग्रो कर रही है, तो बस कुछ अर्से में सबके पास खाना खत्म हो जाएगा। तो आई थिंक ही प्रपोज्ड दिस बैक इन हाउ लॉन्ग अगो, बहुत अर्सा पहले। व्हाई डू यू थिंक हैज इट नॉट हैपेंड, या डू यू थिंक इट विल हैपन? Is there a chance of such a thing happening?
इनकी थ्योरी में वन थिंग दे डिड नॉट अकाउंट फॉर वाज ह्यूमन इनोवेशन. Okay. Yes, the population has been increasing geometrically, but because of human innovation, नहीं, population में human innovation नहीं है. Because of human innovation, we have been able to increase the world food production much faster than arithmetic progression. इस वक्त दुनिया में I don't have the exact stats with me, but around half of the food that we produce, it gets wasted. Did you know that? दुनिया में आधा जो खाना बनता है, देयर इज ऑर्गेनाइजेशन, यूएन का इदारा है, एफओए है या एफएओ, समथिंग लाइक दैट, एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, राइट. ये स्टैट्स पब्लिश करते हैं. इनकी रिपोर्ट मैंने काफी अर्सा पहले पढ़ी थी, तो उन्होंने ये स्टैट ये लिखा होता है कि दुनिया में जितना भी खाना प्रोड्यूस होता है, अराउंड हाफ ऑफ इट गेट्स वेस्टेड. ठीक है. तो राइट नाउ इफ देयर इज एनी पर्सन हंग्री इन द वर्ल्ड, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आई मीन it's more of a problem of allocation of resources or distribution of resources rather than a problem of generation of resources. Okay. ऐसे back to physics. क्या कर रहे थे हम? अपनी जो group project होता है ना global perspectives में, उसमें you're not allowed to like research. अच्छा. आप लोगों के interviews लेने होते हैं, questionnaires करके, surveys करके, फिर आपने उससे अपना सारा group project बनाना होता है. अच्छा, तो you have to do your own research and not rely on research of someone else. Yeah, you can like observe the places, ask people, not research. Like जैसे जो United Nations के जो लोग हैं, उनसे काफी ज़्यादा information हम ले सकते हैं. आपने इकोनॉमिक्स एज सब्जेक्ट नहीं ऑप्ट किया, राइट, ओ लेवल्स में? नहीं. कभी इंटरेस्ट हुआ? अच्छा, मैंने जब सीए में पढ़ रहा था तो मेरे ये कोर कोर्सेज तो अकाउंटिंग ऑडिटिंग वाले थे, बट आई डोंट नो व्हाई मुझे सबसे ज़्यादा जिन सब्जेक्ट्स में फैसिनेट किया था ना, वन वाज लॉ एंड द अदर वाज इकोनॉमिक्स. अभी भी अगर मुझे फ्री टाइम मिले तो ऑन माय ओन आई वुडंट, आई मीन आई माइट स्टडी अकाउंटिंग, लेकिन आई वुडंट लव टू. लेकिन इकोनॉमिक्स और लॉ जो हैं, दे ऑलवेज फैसिनेट मी. अच्छा जी, आप क्या कर रहे थे? क्वेश्चन दिया था मैंने आपको जी. अच्छा, लिखा था आपने? जी. चलिए ठीक. Is the answer 150,000 joules? मैं क्वेश्चन ही भूल गया, मुझे एक सेकंड देखने थे. ये वो 300 मीटर्स और 50 केजी वेट वाला था. जी. अच्छा जी, आप कितना कह रही हैं? 150,000. 150,000, हाँ जी, इट वुड बी 150,000 जूल्स या 150 किलो जूल्स. ठीक है ठीक है ठीक है. ऐसा करते हैं, आज यहीं तक रखते हैं. इंशाल्लाह कल यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे और रेगुलर टॉपिक देखते हैं. चलें, थैंक यू सो मच. My mother wanted to ask a question. Would we be able to finish the whole syllabus till August or like August? अगस्त की कौन सी डेट तक हम क्लासेस कर सकते हैं? एंड ऑफ अगस्त, 31 अगस्त. जब खत्म हो जाए अगस्त में. I think so, because with the pace we are moving, I think पहले भी हो सकता है. आपको चीजें जल्दी समझ आ जाती हैं, मैं समझा रहा हूँ, आपको जल्दी जल्दी समझ आती जा रही हैं, तो यार व्हाई नॉट. मतलब मुझे यही प्रेडिक्शन तो यही है कि यस वी वुड बी एबल टू. ठीक है. क्यों, कोई परेशानी की बात या वैसे ही जस्ट एक असेसमेंट? जस्ट आस्किंग. अच्छा चलें, ठीक है जी. कल हम सुबह मिलेंगे इंशाल्लाह 12 नून. जी. जी ओके, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.